Dear students, in this lecture, we shall try to connect three things, that is homogeneous production function, marginal product, and the capital to labor ratio. Let us see. We are starting with the standard form of a Cobb-Douglas production function, as you can see, and we are trying to calculate the marginal product with respect to labor. So once we start the solution, we will be going through some steps जो मैं आपकी rehearsal के लिए रख रहा हूँ. So try to do this rehearsal and try to learn and get some rehearsal out of it. The answer of this would be this. Let me also give you another helpful hint, and that is capital to labor ratio will appear. हम इसको convert कर सकते हैं into small k, which is the notation for capital to labor ratio. हम इसको reciprocalize करेंगे just to make this expression which has economic meaning. Now this is the MPL which we are satisfied with because इसमें हमने capital to labor ratio को भी incorporate कर दिया. And this is the description of it. Now what I can do with it is that I can check the homogeneity of it. Now for that मैं इसको जो capital to labor value है इसको expand करके लिखूंगा. That is capital over labor. इसका मुझे बेनिफिट ये होगा कि हम जहाँ जहाँ कैपिटल है, जहाँ जहाँ लेबर है, वहाँ वहाँ हम लैम्डा को इंट्रोड्यूस करवाएंगे. सो हमने ऐसा ही किया कि जहाँ जहाँ लेबर और जहाँ जहाँ कैपिटल था, हमने लैम्डा को इंट्रोड्यूस करवाया. सो आफ्टर दैट अगेन देयर इज सिंप्लीफिकेशन, जो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसको इजीली कर लेंगे. एंड आई हैव गिवन यू द आंसर, एंड द आंसर इज दैट लैम्डा की पावर 0 हो जाती है. एंड यू नो लैम्डा की पावर हमें यह बताती है कि डिग्री ऑफ होमोजेनिटी क्या है. तो इसका मतलब है डिग्री ऑफ होमोजेनिटी फॉर द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर ऑफ अ Cobb-Douglas प्रोडक्शन फंक्शन इज 0. सो इन द सेम वे वी कैन कैलकुलेट द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल फॉर Cobb-Douglas प्रोडक्शन फंक्शन, which should be easy for you because you have just understood how we calculate the marginal product of labor. So again it's a small DIY for you. ये सारे steps हैं. अगर if you get confused, you can verify from these steps. Now this would be the answer that we can further investigate. हम इसकी degree of homogeneity भी investigate कर सकते हैं. However इसमें small k है और जिस तरीके से अभी हमने थोड़ी देर पहले k over l को introduce करवाया था, हम यहाँ पर भी introduce करवाएंगे ताकि हम जहाँ जहाँ k है, जहाँ जहाँ l है, वहाँ पर lambda introduce करवा सकें. And here you can see that. और जब हमने इंट्रोड्यूस करवाया तो नोटेशन को हमने ज़रा चेंज किया, बार का साइन यूज़ किया बिकॉज नाउ अ स्केलर इज इंट्रोड्यूस्ड. इसका सोल्यूशन अगेन इज अ स्मॉल रिहर्सल फॉर यू विच practice makes man perfect, and in mathematics you need a lot of rehearsal. So the answer would be lambda raised to the power 0, और जो 0 है that shows that the degree of homogeneity of marginal product of capital for any Cobb-Douglas production function is 0. So now we should come towards the interpretation of it and see what it means. Interpretation is that both of them are homogeneous of degree 0 in variables k and l, because k और l में ही हमने lambda को introduce करवाया था और the power of the lambda was 0. Now in other words we can say that proportionate changes in capital to labor, while it will keep the ratio of the capital to labor constant, because जितनी चेंज हमने कैपिटल में की उसी प्रपोर्शन से हमने चेंज लेबर में की, तो उनकी जो रेशियो है इट विल रिमेन द सेम. सो व्हेन इट रिमेन्स द सेम, इट implies that the marginal product of labor has the degree of homogeneity of 0, and it is based upon a production function which is holding constant returns to scale. So this is how we can link the three concepts, that is the homogeneous production function, the marginal product of labor and capital, and the capital to labor ratio in one process. Thank you.